Yes, students, the next topic that we are going to study is density. It is a very important topic and is very important for numericals point of view and for further studies also. What is density? Why do we study it? Study it. Let us see. Now here it is written, suppose if we take different substances of equal volume such as wood and iron. तो हमने क्या किया, हमने दो चीजें ली हैं, that is we have taken iron and we have taken wood, but one thing is common in them, that is the volume of both of them is same. Let us suppose both of them are having the volume 2 cubic centimeter. अब हम इसका weight find out करते हैं by using physical balance. So what do we find? We find that their masses are different. We will find that कि जो iron का mass है वो wood से ज़्यादा आएगा, isn't it? Iron is having maximum mass as compared to wood. Now, what is the reason behind it? Because the particles of iron are more closely packed than those of wood. So therefore, that is iron का mass ज़्यादा है. इसको other words में हम क्या लिखेंगे? That iron is denser than wood. So iron is denser than wood. दोनों का volume same है लेकिन mass different क्यों आया है? Because iron is denser than wood. Then जैसे हमने लिया था equal volume, वैसे ही अब हम same type of experiment कर रहे हैं but with equal masses and different volume. Suppose we take different substances of equal masses. सबका mass same है. अब हम सिर्फ दो ही substance ले रहे हैं, cotton and lead. You can take more substances also, but the thing is that their mass is same. हमने सबका mass लिया है 1 kg. ठीक है, कॉटन भी 1 kg का है और लेड भी 1 kg का है, बट व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट देयर वॉल्यूम्स आर डिफरेंट. द वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ लेड. जैसे कॉटन का 1 kg इतना हो गया लेकिन लेड सिर्फ इतना हो सकता है, isn't it? The volume of cotton is like this of 1 kg and the volume of lead is this much only. So what is the reason behind it? Why the volume of lead is less? Because the particles of lead are closely packed. तो अगर हम substances लेते हैं of different volumes but with same masses, then that is the part the that is the body which is that is more denser will be, that is having more density. So इस case में lead is denser than cotton, which means that density of lead is more than cotton. अब ये जो हमने word density बोला है, what is that? किसी भी substance की, तो जब हमने इस तरह के substances पढ़े, स्टडी किया कि डिफरेंट मासेस के जो सब्सटेंस हैं उनके डिफरेंट वॉल्यूम हो सकती है और जो डिफरेंट वॉल्यूम्स वाले सब्सटेंस हैं उनकी डिफरेंट मासेस हो सकती है. तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास टर्म आया है डेंसिटी. सो व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. So when we divide the mass of a substance by its unit volume, we get the density of the substance. Next thing is that density is a scalar quantity. Then density का notation क्या है? Standard notation symbol क्या है? Rho. RHO rho. Either we write like this and sometimes the density is written as small d. Then it is having SI unit and CGS unit. SI unit is what? Kg per meter cube. Mass क्या होता है? We know that density is mass by volume. So mass is in kg, volume is in meter cube. So density will come out to be kg per meter cube. And in CGS unit, mass is in grams, volume is in cubic centimeter. It becomes gram per cubic centimeter. So in numericals, we will be using them and we should know what is the relation between SI unit and CGS unit. 1 kg per meter cube is 10 raised to power minus 3 gram per cubic centimeter. We are not deriving it better directly. We remember the relation and we will be using it in the numericals. तो जब भी हमने kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, just multiply it with 10 raised to power
minus 3, and it will be converted into gram per cubic. If I say that density of iron is 7.8 grams per cubic centimeter, अगर आयरन की डेंसिटी इतनी है, so what does that mean? It means that mass of 1 cubic centimeter of iron is 7.8 grams. It means that mass of 1 cubic centimeter of iron is 7.8 grams. तो जब हम किसी का मास डिवाइड करते हैं बाय यूनिट वॉल्यूम वी गेट द डेंसिटी. हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन लिया, उसका मास फाइंड आउट किया. सो व्हेन यू डिवाइड this mass by its volume, you get the density of that substance. That is how much. Now, students, the important part which you have to remember, what is the effect of temperature on density? इसके basis पे बहुत सारे conceptual questions exam में आते हैं. तो आपने सिर्फ relation याद करना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी पे क्या असर होता है. सो वी नो temperature and density are inversely proportional. So what we can say, that density is inversely proportional to the temperature. So if the density of substances decrease with increase in temperature and increase with decrease in temperature, quite simple. So density, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वो क्या होती है, इट विल एक्सपेंड, isn't it? जब वो एक्सपेंड होती है, दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं विच वर क्लोजली पैक्ड, दे बिकम लूजली पैक्ड. वो लूज हो जाते हैं. सो व्हेन द पार्टिकल्स गेट लूजली पैक्ड, इट मीन्स दैट द डेंसिटी इट decreases. So whenever we heat, the body expands, particles get loosely packed, and therefore the density decreases. And when we cool anything, what will happen? The body will contract, isn't it? It contract, which means that the particles, they get closely packed. वो close हो जाते हैं, और when they contract, so when they get closely packed, it means that the density it increases. So when temperature decreases, density increases. When heat increases, then density it. The students जो relation अभी हमने density और temperature का पढ़ा है, that relation is not observed in water. Water में हमें वो relation दिखाई नहीं पड़ता. Behavior of water is different in terms of temperature and density. So in heat chapter also we will be doing about anomalous expansion of water. तो इसके बारे में हम ज़्यादा discuss नहीं करेंगे. जो इस chapter के साथ relevant है, only that much. ये जो anomalous expansion of water है, we will be doing in the chapter of heat. So what is there? How the behavior of water is different? See here. Suppose we have water at 95 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और उसका टेम्परेचर क्या है, सपोज इट इज ऑन फ्लेम, उसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम इसको कूल कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर कूलिंग. तो जैसे हम कूल करते हैं, जैसे हीट दैट इज कूलिंग से क्या होगा, अगर हम चीज को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इजंट इट? लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, उसके बाद जब हम कूल करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, देन वी आर कूलिंग इट फर्दर. लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, अब क्या होती है, एक्सपेंशन. तो ये जो एक डिफरेंट दैट इज फिनोमिना है इन वाटर, दैट इज नोन एज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. जब भी किसी चीज को कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. लेकिन वाटर में क्या होता है, व्हेन वी कूल इट बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, इट एक्सपेंड्स. तो ड्यू टू दिस द बिहेवियर ऑफ वाटर बिकम्स डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. So when we are cooling from 95 to 4 degree centigrade, the contraction is occurring. Contraction से क्या होता है, particles get closely packed, density increases. तो यहाँ पर density increase हो रही है. तो यहाँ पर density maximum होगी. 4 degree centigrade पे क्या हुआ, density becomes maximum.
जैसे यहाँ पर डेंसिटी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम हो गई. लेट अस सपोज इट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. बट व्हेन वी आर कूलिंग इट फर्दर, अब डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब एक्सपेंशन हो रही है, सो डेंसिटी इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. Now, what do we observe? From this phenomena, we conclude that density of water, it is maximum at 4 degrees centigrade. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. ऊपर भी उससे कम है, नीचे भी उससे कम है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है. एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस व्हाट वी हैव फाउंड दैट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड the density of water is either 1000 kg per meter cube or it is 1 gram per centimeter cube. तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है. एंड व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज that when we cool water from high temperature, it contracts, its density increases, and when it reaches at 4 degrees centigrade and we are cooling it further, it start expanding. It does not contract, it start expanding, and its density it decreases. So density of water is maximum at 4 degrees centigrade. तो अगर हम आप have come to know that density of water it is maximum at 4 degrees centigrade, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उसकी डेंसिटी होती. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जो सब्सटेंसेस हैं उनकी डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं एंड वी कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस. तो रिलेटिव डेंसिटी उनकी डेंसिटी नहीं है, वो डेंसिटी है जो हमें मिली है बाय कंपेयरिंग इट विद डेंसिटी ऑफ वाटर. उससे हमें पता लगता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सब्सटेंस इज एज डेंस एज वाटर. So we are comparing it with density of water and we come to know how many times it is as dense as water. Now relative density का formula बहुत simple है. We are not deriving, we're directly using the formulas. It is the ratio of density of a solid to the density of water at 4 degrees centigrade. In place of solid, we can write substance also. So we will be doing the relative density of solid and relative density of liquid. So what is relative density of solid? Relative density of solid is density of solid divided by density of water at 4 degrees centigrade. सपोज हमने सॉलिड लिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. सपोज इफ आई टेक वॉल्यूम एज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो देन डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास. तो we can write the same expression in terms of mass also. We don't have to learn them because as such the formulas will not be coming. That is, this definition is important, that relative density is the ratio of density of solid to density of water at 4 degrees centigrade. So in terms of mass कैसे आएगा? Mass of certain volume of substance divided by mass of equal volume of water at 4 degrees centigrade. हम इसको यूनिट वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, हम इसको किसी भी वॉल्यूम में कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रेशो इट मीन्स कि जितना वॉल्यूम हमने सब्सटेंस का लिया है वाटर का भी उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए. देन वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड. सो यू टेक एनी सब्सटेंस of any volume, find out its mass. You take equal volume of water at 4 degrees centigrade, find its mass. When you divide it, you will get the relative density of the solid. Then relative density, since we're dividing density by density, it has no unit. It has no unit. And it is a scalar quantity. So these things we have to. Now these are some important things about density and relative density which we will be using in our numericals. Numericals में it will be easy. तो किसी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी गिवन है तो डायरेक्टली हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डेंसिटी के दो यूनिट्स हैं, एक है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और एक है केजी पर क्यूबिक मीटर.
isn't it? So if suppose we take a substance, uski density hai 8.9 gram per cubic centimeter, then what will be its relative density? अगर हमें density gram per cubic centimeter में दी है, then relative density is always equal to its numerical value. जो भी numerical value है, that will be the relative density. If suppose the density is given like this, 13.6 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, means kg per meter cube में दी है, then what is the relative density? जो भी इसकी numerical value है, you will have to divide it by 1000. Then you get the relative density. So gram per cubic centimeter में same numeric value और kg per meter cube में whichever numerical value is there, we have to divide it by 1000 and we get the relative density. Now similarly अगर हमें relative density given है तो हम density कैसे लिखते हैं? Suppose we are given that relative density of a substance is 7.8. तो इससे अगर हमें relative density पता है, we can write density in gram per cubic centimeter. We can also write the density in kg per meter cube. So if I want to write the density in gram per cubic centimeter, तो जो भी numerical value है, same numerical value will come, isn't it? So if relative density is 7.8, then density of that substance will be 7.8 gram per cubic centimeter. और अगर इसी relative density से मैंने kg per meter cube में लिखना है, then I will have to multiply it with 10 raised to power 3. अब ये क्यों ऐसे आता है? हमें पता है relative density क्या है? It is the density of the substance divided by the density of water at 4 degree centigrade. 4 degree centigrade पे water की density क्या होती है? Either it is 1000 kg per meter cube you can take, or 1 gram per cubic centimeter. So from here we are getting, isn't it? So it is our choice, हम density को gram per cubic centimeter में लिखें या kg per meter cube में लिखें accordingly. Gram per cubic centimeter में same value, kg per meter cube में लिखने के लिए we will have to multiply it with. Okay, now comes what are the differences between density and relative density. Basically we are writing only two differences. The first difference is density क्या है? It is the ratio of mass to volume, or you can say mass per unit volume of a substance. तो इसमें mass भी substance का है, volume भी substance का है. Mass per unit volume of a substance. And what is the relative density? It is the ratio of density of the substance to the density of water at 4 degrees centigrade. So they are different. Secondly, density का unit है. It is expressed either in kg per meter cube or in gram per cubic centimeter. But relative density, it has no unit. It is a scalar quantity. Density भी scalar quantity है, but relative density, it has no. Students, now we will be determining some other formulas of relative density of a solid substance by Archimedes' principle. सो हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स आएंगे, वो सॉलिड जो वाटर में सॉलेबल हैं और वो सॉलिड जो वाटर में सॉलेबल नहीं है. नाउ वी आर फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, और इसमें हमने वो सॉलिड लिया है विच इज नॉट सॉलेबल इन वाटर, which is not soluble in water. This is a special thing we are taking. अब इसकी relative density, हमारे पास formula है already कि relative density होता है density of substance divided by density of water at 4 degree centigrade. लेकिन अब हम इसका formula एक और निकालेंगे which we will be using in the numericals. Just now we have done previously कि relative density can also be defined in terms of mass. We can say that relative density is the mass of body at certain volume. किसी भी volume की body ले लो आप, किसी भी volume, let us suppose 2 cubic centimeter, then divided by the mass of water at 4 degrees centigrade of volume equal to that of body. तो हमें water भी उतनी ही volume का चाहिए, 2 cubic centimeter, but the water is at 4 degrees centigrade. So when we divide their masses, we will get the relative density. This derivation you don't have to learn, you only have to remember the final result. No need to learn the definition, this derivation.
We are simply, that is, seeing how we have got this relation. Now we know that when we multiply mass with gravity, we get the weight of the body. So this is the mass of body at certain volume. So when we multiply it with gravity, what we will get? We will get the weight. ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम कितना था? इसका वॉल्यूम था 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हमने दैट इज सपोज हमने इसको पानी में इमर्स किया, वाटर में इमर्स किया, तो वाटर डिस्प्लेस हुआ. वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? जितना अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है, isn't it? So therefore mass of water whose volume is equal to the volume of the body, and when we multiply it with gravity, we will get the weight of water displaced by body at 4 degrees centigrade. I'm repeating this again. जो बॉडी हमें गिवन है उसका हमने वॉल्यूम लिया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. हमने उसको पानी में इमर्स कर दिया, उससे पानी डिस्प्लेस हुआ. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर displaces according to the, that is Archimedes principle, it is equal to the volume of body immersed. कितना इमर्स हुआ है? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है. तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है अगर हम उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, we get the weight of water displaced by body at 4 degrees centigrade. According to Archimedes principle, weight of water displaced, it is actually equal to upthrust, or we can say it is equal to the loss in weight of body. So these are same things. Weight of water displaced by body, loss in weight of body, upthrust means the same thing. What is meant by loss in weight of the body? It means weight of body in air माइनस द वेट ऑफ बॉडी इन वाटर. और ये जो मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये एयर में हमने फाइंड आउट किया है मास, सो वी कैन राइट इट एज वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर. Isn't it quite simple? तो अगर हम weight of body in air को ले लें W1 and weight of body in water we take it as W2, क्योंकि वो same तो होगा नहीं. This cannot be same. Why is it so? Because when a body is immersed in liquid it experiences upthrust and there is apparent loss in the weight of body. So this is also W1. So we can write a more clean formula that relative density is W1 upon W1 minus W2. What is W1? Weight of body in air. तो जब भी numericals में W1 होगा, that is the weight of body in air, and W2 is the weight of body in. We are doing what is the relative density of a solid which is soluble in water. तब उसकी relative density हम कैसे find out करेंगे? जो सॉलिड सॉलेबल नहीं है उसको हमने पानी में इमर्स किया और उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या आई थी? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर ओवर वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर. तो अगर कोई सॉलिड सॉलेबल है वाटर में, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा, isn't it? Then how we find relative density? उस केस में हम वाटर को यूज नहीं करते हैं, उस केस में हम कोई डिफरेंट लिक्विड लेते हैं, वो लिक्विड जिसमें सॉलिड सॉलेबल ना हो, वो लिक्विड जिसमें सॉलिड सॉलेबल ना हो. देन वी यूज द सेम थिंग. हमने लिक्विड लिया, isn't it? हमने एक सॉलिड लिया. we find the weight of solid in air. Let us suppose the weight of solid in air is W1. ठीक है, फिर हमने उसको लिक्विड में इमर्स किया, दिस इज द लिक्विड, एंड देन वी फाइंड आउट इट्स वेट कि पानी में उसका वेट क्या है. लेट अस सपोज इट्स वेट इन लिक्विड इज W2. Then how do we find the relative density of solid? It is the weight of solid in air upon the loss in the weight of solid in liquid into the relative density of the liquid. तो जो liquid हम लेंगे उसका relative density हमें पता होनी चाहिए. So we will find the weight of solid in air, weight of solid in liquid, and apply this formula. We will get the relative density of solid which is soluble in water. So if it is soluble in water, we will take different liquid, and if it is insoluble in water, we will use. Students, these formulas that we are doing of relative densities, you don't have to derive them. You just have to remember them for the numericals.
because one or the other numerical do come from relative density. Now, how do we find the relative density of liquid? हमने relative density of solid, insoluble solid कर लिया है. How do we find the relative density of liquid? उसके लिए क्या है? We take water in a vessel and we take a liquid in a vessel. इसमें हमने क्या लिया है? Water, and here we take, that is any liquid जिसकी हमने relative density find out करनी है. First of all, we take a solid and we find its weight in air. Let us suppose its weight in air is W1. फिर हमने उस solid को liquid में immerse कर दिया and we calculate its weight. Let us suppose its weight in liquid is W2. Then we take it out, and that is we immerse that solid in water. Okay, now we immerse it, same solid, immerse in water. Let us suppose that its weight in water is W3. Its weight in air was W1 already. Then by this formula, we get the relative density of liquid. That is weight of body in air minus weight of body in liquid over weight of body in air minus weight of body in water. So loss in the weight of body in liquid minus the loss in the weight of body in water, that will give us the relative density of liquid. We are not going to perform any experiments. You don't have to learn them. You only have to remember the relation of relative density of the